So I guess Tariq, we should start now. I mean, let me formally introduce you. So Tariq is originally from Khyber Gojal, and if anyone wants to turn on their camera, I mean, feel welcome to do that. तो तारिक ने जो है यूईटी लाहौर से अपना बैचलर्स किया, उसके बाद मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, आई बिलीव ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप पे, और वहाँ से फिर तारिक वापस आए हैं पाकिस्तान, जहाँ पे उन्होंने कैयू में काम किया और 1 साल एक रिसर्च के साथ लगे रहे, आई बिलीव। तो उसके बाद से अब जो है तारिक स्वीडन में अपना पीएचडी कर रहे हैं माइनिंग में। तो इज इट माइनिंग इंजीनियरिंग और आई डोंट नो नेचुरल साइंसेज में, जो है मुझे इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो तारिक, I mean, let's begin. Maybe you can do your formal introduction and then. हेलो एवरीवन। तो उर्दू में करेंगे या फिर इंग्लिश में स्विच स्विच करते रहेंगे। तो मेरा नाम तारिक है और ताल्लुक़ मेरा खैबर से है। बेसिक एजुकेशन मेरी गिलगित की है, उसके बाद फिर मैं पिंडी आया अपने हाई स्कूल के लिए, फिर कॉलेज दोनों पिंडी से, और फिर यूटी लाहौर, फिर ऑफ कोर्स फिर बाहर जाना पड़ा। तो आज के दिन के हवाले से महमूद ने मुझे बोला था कि कोई स्कॉलरशिप पे कोई सेशन करना है। तो उस लिहाज से ये कि क्योंकि मैंने खुद भी स्कॉलरशिप अवेल किया है, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं चाहूँगा थोड़ी चीज़ें शेयर करूँ। तो बीच में जब आपका दिल करें, अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। तो महमूद, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ऑप्शन है मेरे पास कि नहीं है? क्योंकि आपने शायद डिसेबल किया हुआ है। मेरे ख्याल है आप ट्राई कर लें, आप कर सकते हैं क्योंकि। क्योंकि आपने वो सेटिंग्स में आपको शायद उसको एबल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं बगैर उसके नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन। कर लेता हूँ, लेट मी सी आपको। शायद पार्टिसिपेंट्स में आपको शायद कुछ करना आप पड़ेगा। आपको होस्ट बना लिया मैंने, किया। चलो ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से अब आप कर सकते हैं। ओके, चलो मैं देखता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है मेरे ख्याल से? हाँ, नजर आ रहा है। ओके, चलो जी। तो मैं चलो शुरू से ही स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा हम वेट करें, किसी ने मज़ीद ज्वाइन करना है या क्या प्लान है? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आ रहे हैं। तुम्हारा माइक बंद है महमूद। मेरे ख्याल से हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि चले, लोग आते रहेंगे और मैं उनको एडमिट करते रहूंगा। चलो ज़बरदस्त हो गया। चलो मैं इसको एक कर देता हूँ। हाँ, स्क्रीन नज़र आ रही ना आपको? परफेक्ट, चले। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है स्कॉलरशिप का, जो फर्स्ट स्टेप है कि आपने किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला है किसी भी बंदे का स्कॉलरशिप ना मिलने का, वो ये है कि वो स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करता है। आ, उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। वो सोच रहा हो कि यार शायद वो इतना इस काबिल नहीं है कि वो अप्लाई करे, या फिर वो सोच रहा हो कि यार मैं करूँगा, और एंड टाइम पे ना आखिरी दिन पे आके वो अप्लाई करना शुरू करे। लेकिन मेरे ख्याल से जो एप्लीकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अ, आपकी विल, कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आप वाकई में कोई स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एप्लीकेशन स्टार्ट करें पहले। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए ये है कि आपके पास कम से कम इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी स्कॉलरशिप्स आपके फील्ड से रिलेटेड हैं जिस पे आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर वो अवेयरनेस आपके पास है, और मेरे ख्याल से हमारी कम्युनिटी में काफ़ी लोगों के पास होता है, क्योंकि काफ़ी ये स्टूडेंट लेवल्स पे भी और इमामती इदारों की तरफ से भी काफ़ी ये सेशंस रखे जाते हैं। तो काफ़ी स्कॉलरशिप्स का वैसे भी आपको आइडिया हो जाता है आप जब हाई स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं। तो फिर उसके बाद ये सारा आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितनी कमिटमेंट है और मोटिवेशन है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है कि आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, उसके बाद अब ईदर योर एप्लीकेशन इज गोना बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड।
अब एक्सेप्टेंस का जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से काफ़ी एप्लीकेशन हम इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते हैं। या तो हमने आइल्स दे के रखा नहीं होता है, या हमने अपने जो है ना, मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जो फारिग होने के 2 साल बाद तक उनके पास उनकी डिग्री नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ऑन दूसरे एंड पे जो मसला है कि स्टूडेंट के एंड पे मसला है कि वो कोई चीज़ तैयार नहीं रखता, और एंड टाइम पे वो जो है ना लास्ट डेट पे अप्लाई करने की कोशिश करता है, और बगैर किसी डॉक्यूमेंट वगैरह के सबमिट करता है, और वो हो इस उम्मीद में रहता है कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, जो कि मेरे ख्याल में बहुत गलत उम्मीद है। क्योंकि आपकी वो एप्लीकेशन जो है ना वो प्री स्क्रीनिंग में ही रिजेक्ट हो जाती है। तो वो जो सारा आपने मेहनत किया है रेफरेंस लेटर लेने में, टीचर से एक्सपीरियंस लेटर लेने में, जो भी आपने चीज़ें की हैं, वो सारी फिर दरी की दरी रह जाती हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें एक तो ये कि आप अपने जो रेफरेंसेस हैं उनको भी एक तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे रेफरेंस लेटर्स मांगते हैं इससे पहले कि क्रॉस चेक करने से पहले कि आपको आपकी क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, और फिर इवेंचुअली जो है ना आपको फिर मुश्किल होता है अपने रेफरेंस लेटर लेने में, क्योंकि आपने बार बार उनको बताया होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उसमें अमूमन लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं, तो इस मामले में वो आपको कहेंगे कि आप एक कोई रेफरेंस लेटर लिख के भेज दें, मैं साइन करके आपको भेज दूंगा। अमूमन ऐसे होता है। तो अब उसमें ये होता है कि हमारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो किसी से पूछ लेते हैं कि यार रेफरेंस लेटर भेज दो, वो भेज देते हैं, वो उसका जैसे उन्होंने बनाया होता है उसमें थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाते, उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, नाम अपना चेंज करके आगे भेज देते हैं। अब उसमें ये होता है कि किसी ने लिखा है ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, बंदा अपने इंजीनियरिंग वाले टीचर को भेज देता है, उसके पास भी टाइम नहीं होता, वो भी बगैर पढ़े साइन कर देता है। अब ऐसा रेफरेंस लेटर किसी के सामने आएगा तो ऑफ कोर्स फिर आपके चांसेस बहुत मिनिमम होंगे। तो उस एंड में भी आपका जो है ना स्टूडेंट के एंड पे जो एफर्ट है वो बहुत लाजमी है। फिर मोटिवेशन लेटर का भी ये है, मोटिवेशन लेटर का भी ये है कि हमने भी किया है, हम किसी का मोटिवेशन लेटर लेके कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें से थोड़े बहुत चेंज कर दिए और आगे सबमिट कर दिया, और फिर उस उम्मीद में कि यार एक्सेप्ट हो जाएगा। वो भी मेरे ख्याल से बहुत गलत बात भी है, और मेरे ख्याल में उसमें आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि आप अपना मोटिवेशन लेटर आपके कोई नेक्स्ट लेवल इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी जेन्युइनली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और जो नॉर्मल मोटिवेशन लेटर के जो स्ट्रक्चर होता है उस पर कितना फॉलो करते हैं। तो उसके बाद फिर एक एक तो ये कि अगर आप लकी हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगा आपका लेटर, दूसरा है कि अनलकी हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब रिजेक्शन जो है ना वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिजेक्शन अगर आपको नहीं होती तो आप कभी स्कॉलरशिप विन नहीं कर सकते। बहुत कोई लकी आदमी होगा जिसको पहले ही चांस में स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल से रिजेक्शन से आपकी बहुत लर्निंग होती है। आप अप्लाई करते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स में टेस्ट रिक्वायर होते हैं जिस तरह एरास्मस वगैरह में, तो उसमें आपकी अलग ग्रूमिंग होती है। कुछ में आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने होते हैं, कुछ में इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, कुछ में एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने होते हैं। तो उस तरह की आपकी एक तरह से वो हो जाती है, सीवी आपका प्रिपेयर हो जाता है, काफ़ी आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, तो काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिजेक्शन के बाद, कि आपने हार नहीं मानना और दोबारा से अप्लाई करते रहना, क्योंकि इवेंचुअली कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, और अगर नहीं भी मिल गया तो आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं और आपकी अच्छी बड़ी लर्निंग होती है इस पूरे प्रोसेस में। तो मैं एज अ स्टूडेंट या यही कहूँगा कि अगर आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट होती है तो प्रिपेयर एंड अप्लाई अगेन। पर प्रिपेयर से मतलब ये है कि वही एप्लीकेशन जो आपके पिछले साल था उसी को कॉपी पेस्ट करके फिर अप्लाई करेंगे, तो उस अप्लाई अगेन का कोई फायदा नहीं है। फिर इवेंचुअली आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। अप्लाई अगेन का मतलब ये है कि आप देखें आपकी क्या गलती थी, और किसी सेलेक्ट से किसी ने वो स्कॉलरशिप अवेल की है, ट्राई टू कॉन्टेक्ट हिम। लेट्स से महमूद ने अगर कोई स्कॉलरशिप अवेल किया, आप उससे पूछो कि यार क्या आपने कैसे एप्लीकेशन दिया था, या आप अपन उसको अगर आप महमूद को बोलते हो यार कि मेरा मोटिवेशन लेटर लिख के भेजो मुझे और मैं अप्लाई करूंगा, तो ये जो अप्रोच है ना, ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स का यही अप्रोच है। वो चाहते हैं कि इस बंदा आपके एप्लीकेशन भी फिल करे, मोटिवेशन लेटर भी लिखे, रेफरेंस लेटर भी लिखे, सब कुछ लेके आपको दे दे। अगर उनका बस चले तो वो कहे आइल्स भी आप दे दो और वीज़ा भी आप अप्लाई करो, बस हम पहुंच जाएंगे फिर। तो ये कभी भी मेरे ख्याल से पॉसिबल भी नहीं है और फायदेमंद भी नहीं है। तो उसके लिए यही है कि आप अपने एंड पे जो एफर्ट है ना, स्टूडेंट का एंड पे जो एफर्ट है वो उसको देनी पड़ेगी। और अभी तो ये है कि आपको किसी से पूछने से ज़्यादा आप कहीं भी सर्च करके तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो शायद जिस बंदे ने स्कॉलरशिप अवेल की उससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो, तो बाकी लोगों ने शेयर की हो, तो वो एक स्टेप है। उसके बाद आते हैं कि आप स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए, वाई डू यू वांट अ स्कॉलरशिप एट फर्स्ट प्लेस, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट मोटिवेशन। इफ़ इट इज़ बिकॉज यू वांट टू
go to a good university, have a master's degree or a PhD, or is it that you are so fed up with the society in Pakistan that you want to just escape, or wherever you are in a developing country, or is it just money? You apply for a scholarship and you see that you will get a stipend every month around 1,000 euros, or let's say around 1,500 Australian dollars, and then that's your motivation. Maybe you are earning 20,000 per month in Pakistan, and that's your motivation. It doesn't matter what is your motivation. You need to have some motivation to apply. And whatever that motivation, you should take it in a positive direction. And I think apply. And if you have to apply, then you need to know about the scholarships. And what do you know about the scholarships? Have you got any idea about the scholarships? Do you know about the well-known scholarships like Fulbright, DAD, Erasmus, Australian Awards, or scholarships from AKF, HEC? Do you know them? अगर आपको इन scholarships का नहीं पता, तो इसका मतलब है कि you need to do some study. You need to know what's going on. And if you don't know, you need to search for these scholarships. Or if you already don't know about these scholarships, I think it's time to just go Google, search, join their Facebook pages, LinkedIn pages, and see when they open, what do you have to apply and what are their prerequisites. And finally, coming, if you know about the scholarships already, and how many have you applied so far? अगर आपने अभी तक कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किया है, तो what is stopping you? Whether it's the IELTS money fee you don't have, whether it's the document you don't have completed, whether it's your motivation letter, what is stopping you? Like, क्या चीज़ आपको रोक रही है? You have to question yourself and then try to fix it. Or let's say अगर आपको कोई financial issues हैं जिसमें आप IELTS का फीस नहीं दे सकते, तो I think we as a community are there कि आप कोई हेल्प ले सकते हो कहीं से, अगर आप समझते हो कि आप मतलब एजुकेशनली उस पॉइंट पे हो, उस लेवल पे हो कि आपको ये स्कॉलरशिप आराम से मिल सकता है और आपको हेल्प चाहिए, तो आई थिंक आपको हेल्प लेना चाहिए. और दैट शुड नॉट स्टॉप यू, वेदर इट्स मनी, whether it's some other help you need. I think you need to look for it, and you will always find some help. There are always people who are ready to help. So if you haven't applied so far, and whoever has joined so far, or whoever will listen to this later, I think you need to apply. That's very important. You need to start thinking about it and start applying. And thinking about it is another step towards your goal. But if you start applying, I'm sure that one of the days, you would be having a similar session with students and telling them, like, you need to apply. And we all have had rejections. I remember when I was in my undergrad, I was applying for scholarships, I had rejections. When I was in my master's, I applied for scholarships, I had rejections. But eventually I got one. So, and I wasn't like the brightest students, or nothing should stop you. As long as you have a good GPA around above 3, in some cases above 2.7. In some fields, you don't even need a GPA. If you have a good skill set and you need to apply, you have a good portfolio in like arts or anything, then I just think you can apply. But I think that you need to apply. That is very important. If you want to get any scholarship, you just need to apply and apply. I would highly recommend it. Coming to Australian awards, I'm not going to talk about other scholarships. I've applied for Australian Endeavour when I was in my bachelor's. I don't remember what was their process, but I don't completely remember Australian awards as well, because it was a long time ago, but I was looking at it yesterday. And I saw that the last date for this year is 30th April. And one important thing, which is also very important, is when you are applying for scholarship, in some cases you need the passport. And a lot of us, we don't apply for passports. And it's just a simple step. And when you are in Hunza, Gilgit, Khizr, or anywhere in that region, I think it's much easier, because you can easily go and apply for your passport, and you don't need to apply for an urgent one. You can apply for a normal one, you pay less, and you get your passport, instead of waiting for the last day. And like the application date is like, let's say 30th April. Now you start preparing for the IELTS, you give the IELTS, and then you have given your IELTS and you've forgotten to make your passport.
And then at the last day, you need an urgent passport. You go for the express entry and you spend your money and all those things. I think that is also a problem we have, that we keep everything to the last day. That's a problem with many of us. I had the same problem. But I think it's not a good idea, or it's not a good way. The better way is to have your documents ready, attested, and then apply. For Australian awards, you need your documents to be attested from HEC. I don't remember if we had to attest it from Foreign Office. I think we didn't need it at that time, but I don't know the rules now. But it was usually from the yeah, I think it was just HEC and some attestation from Kacheri as well. And then you need the IELTS with 6.5 and a minimum of 6. And this you need the results. You cannot just send that I have booked a test. I guess if you have some disability, then you can go with a 6 IELTS band and a minimum of 5. But normally it's 6.5 with 6 each. And this for Pakistan is only for master's scholarships. But if you're applying from maybe other Central Asian countries, I think you can also apply for PhD but for Pakistan, it's only masters. And a minimum experience at my time, it was 3 years, luckily, but now it's 5 years of experience. You need to have some 5 years of experience. And then they have some preferred fields every year. This year, I think it's agriculture, climate change, women empowerment, and infrastructure, water resources. I think these are the main sort of theme they have. But it changes year to year, so you have to look at it. So that's it from my end about the scholarships from Australian Awards, and these are my contact. If you need any help, I don't promise to reply you at the earliest, but like whenever I have time, I will reply you and I will try to assist you in whatever way I can. And that's it. Thank you so much. Thank you very much, Tariq. It was really nice. It was very, I mean, I wasn't expecting you to go really back and go into, all these details from the very start. And it's so nice of you that, कि आपने इतने डिटेल के साथ इनफैक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से करना है और पूरे प्रोसेस आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया है. So we have some questions in the Q&A, but before those questions, I personally have some questions. One is related to your last thing that, Australian award usually is for people from natural sciences. How far is that true? Because when I was applying, I remember there was just one field that was, humanities and social sciences, which was, media studies. So I applied as well back in, I guess, 2015 or 16 or something. So Yeah. how far is that true? I think it changes from year to year, but usually health sciences, like or natural sciences, engineering, everything is there. It's not that you cannot apply, but they have some preferred fields. So, but eventually you can connect any field to the themes they have. Let's say if it's climate change and you are working on electrical engineering and you're gonna build something, or you have an innovative idea that's gonna help towards climate change. So eventually you can apply as well. It's just that how you apply. And if it's about women empowerment and you are a person studying media sciences, you can still connect it to the women empowerment, climate change, or anything. So I think it's not about, like if it is, of course, they are the preferred fields and they have a quota, like they give 50% to men, 50% to women. So those things come into play, like they give you a plus point if in those cases, but there is no such thing that you cannot apply. You can apply. And I think it's not like that you can just apply if you're in that field and you will get it if it's, I don't think so. It's like that. Okay, perfect. Then another question, which is mark really important? I mean, marks are important or not? Because मेरा personally experience like throughout, my academic career or throughout scholarships that I was able to, avail, they did not necessarily, had marks as their priority in any scholarship. So how far is it true that marks really matter? Because the only scholarship where my marks were, taken into account was in the University of Cambridge for the MPhil program.
I think the marks have some importance. If we totally ignore it, that's also sort of not right, because if it had no importance, you will not have an IELTS score of 6.56 each, you know. So there are always some minimum requirements when you go into the university. So if the university has a prerequisite that you need to have a credit of this many, then of course, if you win the scholarship, you cannot get the admission anyways. So of course they look into those things as well, but I don't think it is the most important thing. It is it is one of the important things, but it's not the most important thing. And then if you have, you know, like uh, if you are talking about GPA, if you have like around 3, I think that's quite good. Even if you have about 2.7, that's good. But if you have a GPA of 2 and you're applying, then you need to be, you know, like extraordinary, and you need to prove yourself through your application that you are, you know, like maybe you missed somehow, and that's fine. You know, that can happen, that you were uh, doing not good in the university, but you are a good student and you're trying to prove something else. But that, you know, like it's just because somebody in the pre-screening can just reject your application looking at the marks. So you sort of lose the chance. You give yourself less chance by doing that. But I don't think that it should stop you from applying. I think I have seen many people with less grades getting the scholarship, and they have done way better in their masters and PhD. So I think marks is, but having said that, I don't want to like sort of motivate the students to like chill in their bachelor's and masters and then hoping that, yeah, of course the scholarships are waiting. That I think that would also be wrong. So I think they need to put their effort, and if there is low marks, they need to somehow justify it, that why they had low marks, or, you know, as long as they can justify it, I think the scholarship is not a problem. Mhm. Tariq, I'll just ask you a very personal question, and Yes. I'm asking it for a reason, you know, that your current scholarship you're being paid, and how much are you paid? Ah, Forget me. you don't ask a man his salary, huh? But of course, we the current scholarship in Sweden, we have a different system. So we are not given a scholarship. We are employed as an employee. So we just apply for the job as a PhD student, and then we get all the rights of a employee what they have. So we can apply for loans, we can buy houses and stuff like that. And currently, the for PhD when you start, it's around 38,000 Swedish crowns, and after taxes you get around 30 24th, I guess. It's not 38. When you start, you get 32,000 Swedish crowns. That's around, eventually after tax you get 24,000 SEK, and that How is much is that in 2400 Pakistani rupees? 2400 euros. How much would it be in 2,400 Pakistan? euros, almost 6, 7, 8 lakh. So I think it's maybe it's not 24, because euros is better. SEK is around 27, so you can calculate. I think it's around 5-6 lakhs you get starting. Mm. But then, of course, your expenses are accordingly here. Everything is expensive. So, Yeah, but it's still very good for a PhD. I guess Sweden is one of the best countries when it comes to paying for PhD. They are one of the best paid countries. yeah, that's true. That's true. मेरा एक दोस्त अभी वहाँ गया है, ओमिया, लूलिया से पहले Oh, ओमिया। yeah. हाँ, ओमिया। Oh, yeah. Oh, I wanted to connect you guys as well. Maybe I'll connect you. Okay, no He was worries. saying they get really good paid there. I mean, Yeah, yeah. Scholarships, accommodation. like they mostly have jobs here. PhD is like a job, so they pay really well, I think. Mhm. And I really like what you said about rejection is very important. So I personally, during my bachelor's, मैंने तकरीबन I guess 12-15 स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया, मास्टर पे मैंने 6-7 पे अप्लाई किया, और पीएचडी में भी मैंने एटलीस्ट 5-6 पे अप्लाई किया होगा. तो Mm, it's very, true of you to say that rejection is important, because only then you get to know that, how to get better in the next, how to get better. Otherwise, you mm, just compile an application that's not really thought through, that's not really, uh, in depth, and that's not really to the point, or to the I mean, however their criteria is of the scholarship. So mm. I really like that point. And about the reference letter, you said that you need to make it final, right? कि आपको final करना पड़ेगा, then you take it to someone to sign it. So how, Yeah. how does that works?
Or you Because mean what I you have should not seen, expect from your teacher to? usually it's like because it happens here as well that they don't have enough time. So sometimes they can write. For in my case, my professors were very nice to write. But then like if you're applying, let's say if you're applying for 5, 6 scholarships in a year, and then you want reference letter all the time, Hmm. of course, then it's gonna be hard for them as well. So it's sometimes they ask you to like send us a format and then we will look through, or sometimes they have a format, so they just put your name in it. Hmm. But I think it's better if you look for a format, you should put some effort to like, like look if you are getting it from somewhere and try to at least change the fields and stuff. Because I've seen some motivation letters from people, they were just copied, paste with their names, and then they send it forward and they say if you can help. And when you read it, you know that they are saying that when I was here and then they were not from that place, you know that they are not from that place. And Hmm. then you sort of know that, okay, they haven't put any effort in. So I think it's the same for the reference letters, that it should not be a copy paste, and it should not be, imagine you're sending three reference letters and all three are exactly the same. So the person reading the application, of course, is going to know that this is like just maybe a crap or something. Hmm. Okay, perfect. Let's just quickly go to the question and answer session. And let's go to the chat where we have one question from Faiza. I have applied, but I need assistance. Yes, you can reach out to both Tariq and me so we can see what assistance we can give you. Please share HSC attestation process. It's very easy. You go to their portal, you upload your documents there, it gets attested. Or either in person, you could go to their office in H9 in Islamabad, and then you can do it. And Tariq, if you know more about it. I think I know exactly the same way. You have to go, when I remember I went to their office in H9, but you have to go very early in the morning. And if you know someone there, that's better, then they can help you somehow with making it quick with you, because usually it's a lot of a long queue. So you have to go early in the morning. You can't go like 9, 10, and then expect that you will get to test it the same day. Yeah. And are you willing to assist her? Because she's Exactly, of course. No, but I will share the presentation with you so you can share it with them, and I have my contact details there. So if anybody wants to reach, they are more than welcome. and yes, we will also add you to the group so that it's easy for people to reach you out, if that's fine with you. Okay. Yeah, Uh, yeah, of course. No Thank you. problem. Faiza is again asking, is Faiza, yeah. AKF scholarship process requirements and application to universities and scholarship portal. I know some friends who had applied for AKF. I think it's just like any other scholarship process that you have to apply. And of course, the scholarship is a bit different there because it's, I guess, 50% your grant and 50% is like a loan, so you have to pay it 8%. back. Yeah, but it's not like a strict where you have to pay it in certain time. I think you can be, if you get a job, they give you like some sort of time. So I think And it's they also AKF. keep, sorry, I'm cutting you. Yeah, please. No, I think you need. I think it's a good way to, if for another way to go abroad. I think. Yeah. And I guess it's also clearly mentioned on their website that there are certain countries where education is free, so they don't support funding for those countries. I mean, initially it was also including the UK, but I guess this year they took out UK from the list. I don't know. You can go to their website for the letters. So the process is that first you need to get an admission and then you can apply with them. So if you're already studying somewhere, you can also, if you don't have scholarship, you can also, get it. Just a quick update, you can rejoin this conversation because Zoom, gives you half an hour. तो आप दोबारा join करें, दोबारा वही link use करें, दोबारा आप आ जाएं क्योंकि अब बंद होने लगा है तो हम Q&A को जो है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं Okay. तो या it's Should going to we be should we have the recommendation letter? Or I saw a message in the chat box about the recommendation letter. There was something. How many pager recommendation letter is required? Can professors use same letter multiple times? I think if it's different scholarship, of course, they can use the same reference letter. And it depends, I don't think so. You need more than one page if you are a bachelor or a master student, unless you have done like wonders, then maybe you can have 2 pages of recommendation letter. But yeah. I think one And is I fine. guess also while writing the reference letter, make sure that it's quite open so that you can use it for multi-purpose. So tell your teacher, or if you are writing it yourself,
कोशिश करें कि वो थोड़ा सा ना वर्सटाइल हो, थोड़ा सा आप उसको डिफरेंट स्कॉलरशिप के लिए यूज कर सकते हो, यानी कि उसके वर्ड बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना हो और या उसमें यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट वगैरह क्लियरली मेंशन ना हो, ताकि आप फिर उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि आई नो आई हैव बीन थ्रू द प्रोसेस वेरी हार्ड कि आप जो है एक ही बार बार जाके अपने प्रोफेसर से रेफरेंस लेटर लिखने को बोलो, और पाकिस्तान में वैसे भी वो इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, रेफरेंस भी ऐसे लिखते हैं कि बस फॉर द सेक ऑफ जस्ट राइटिंग इट। तो या how many recommendation letter is required? It depends. I guess some scholarship they require you to just send one recommendation letter. Some even ask for four recommendation letter from work, from academic, and from your personal acquaintance. So it depends from scholarship to scholarship. So Tariq, if you want to add to this. I think that's it. Yeah. Can you review the recommendation letter we have? Yes, for sure. We can do that. You can either send it to Tariq or to me, and or also our last speaker, Wahid. He is also good at writing because I know him personally. So he's also in the group. You can give it to any one of us. Yeah, no worries at all. Yeah. And anything else that if anyone wants to ask question, just jump in and ask your questions. Turn on your cameras because it's a discussion. We do not want to make it like this one-on-one conversation, but let's make it a group discussion. Can you kindly send the link of the scholarship related to your university, Tariq? Can you do that? I can send you the scholarship to the Australian Awards, of course, but you can Google it. Like you can write Australian Awards Pakistan, and it will just come up. And also for the Swedish. For the Swedish one, I told you it's like if there is a PhD position, you just apply for it. But if there are some master scholarship. If they are, I will share it in the group. But usually for the PhD, it's just a job, like a job application you have. They have it online, and then you just apply for the job application. Okay, perfect. Any other question? John, you are not mute. Let me mute you. But maybe he wants to ask a question. Yes, John, do you want to ask a question? Jan by Jan. Yeah, I guess one thing Isaiah is asking about the portal. Yes, I mean, some universities require you to submit it through their portal. Some require you to submit in hard documents. At least that's now not the case. At least when we were applying, that was the case that we needed to send it in hard copies. Do we need to apply for scholarship board and also in the para? I think also it's like maybe she's asking about if you need to apply for the university as well when you're applying for the scholarships. In case of Australian awards, you don't need to apply to the university. You give a preference list in your application, and once you win the scholarships, they will have a consultation with you. Let's say if you have chosen a university which they think is not the best one in Australia, they might recommend you for another one. But if you have a strong reason for it, they can still accept where you want to go. But in some cases, like I guess in some American universities, if you're applying for a PhD, you need to have or a master scholarship, you need to have an admission first. So then in that case, you need to apply for the teacher if it's like a teacher assistantship, then you need to have the admission, and then you apply for the assistantship. So it depends, I guess. It can change from one place to another, and I think it's just you need to look at the application and what they are asking for. Yeah. Also, for example, with DRD, the process is like first you get admission, you secure your admission, later you apply with the scholarship. It's the same with a lot of a lot of UK universities, for example, Cambridge, Oxford, वगैरह, they require you to first get admission, and then after that they will ask you to apply for different scholarship that is already with them.
I mean, they have a lot of, funding from all over the world. So you can then choose from the list of the scholarship that best suits you, or if you meet their criteria. And it's the same for Harvard and other US universities. So, but then it again depends from university to university as well. So make sure, but mostly the case is the one that I just mentioned. Mehul, there is a question, I guess, about how to check the authenticity of scholarships that are available online or shared through groups. So maybe if you want to say something about that. How to check? How to check the authenticity of scholarships that are available online or shared through groups. The best thing to do is that because there are thousands of scholarship, the best thing is to go to the official website of the university and check if they admit student from, these scholarships. So I know, like last week, someone sent me this university somewhere in Berlin. And when I went to their website, it was all original website, all original addresses and everything. But since I know Berlin, क्योंकि मुझे बर्लिन की गलियां पता है कि कहाँ पे क्या है. But this university was just the address was of an empty park in Berlin. So yeah, I mean, it's very hard to sometimes, लेकिन इनका तो आपको पता है कि जैसे एरास्मस है, डार्ड हुआ, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स, ये तो ऑथेंटिक है, ठीक है. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के अपने ट्रस्ट होते हैं जो कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी देख सकते हैं. बाकी जो छोटे छोटे स्कॉलरशिप है, अवॉइड करें कि ये जो कुछ स्कॉलरशिप नहीं आती जिसमें आपको बताया जाता है कि आप पता नहीं सिर्फ एक रेफरेंस लेटर दे दे, एक एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट छोटा सा होता है वो भेज दें. और तो इस तरह की चीजें हम्म। आप अवॉइड करें मेरे ख्याल से. इस तरह की स्कॉलरशिप्स, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जितना अप्लाई करने की कोशिश की है, एट द एंड वो सारे फेक ही निकल आए. हम्म। तो तारिक, इफ यू वांट टू ऐड टू दिस. आई थिंक आई एग्री कि आप जो वेल नोन स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि फिर वो आपको पे भी सही करते हैं, तो आप फिर इस काबिल होते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करें. अगर अदरवाइज अगर कोई ऐसा स्कॉलरशिप है जो आपको हाफ पे कर रहा है, और अगर आपकी रीज़न ये आपने बाहर निकलना है, तो फिर उस केस में भी आपके लिए ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने लाइक इजीली कोई फुली कवर्ड स्कॉलरशिप लेना है, तो उसमें मेरे ख्याल से अच्छे स्कॉलरशिप्स के अलावा कोई ऐसे स्कॉलरशिप नहीं है जो आपको फुली कवर करे. तो वो आपको एक तरह से फ्रीडम देते हैं इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज एज वेल. It's not just the money, it's the freedom you get with your studies, because otherwise you have to find jobs here, odd jobs, do odd jobs, and then if you're doing odd jobs, what is the chances that you will be able to put the same effort in your studies? So I think it's more like what choices you can make. And I think you can apply for all, and if you don't have any option and then you still want to go out, then maybe even the small options are also okay with you, if it's 50% scholarships or just fee waiver and all those things. Yeah. And, make sure that you apply, I mean, prioritize, because in America, there are a lot of universities that just rip you off with their tuition fee. And even they would ask you to be, आप हमें 50% ट्यूशन फी दे दे, या आप हमें 30% दे दे, बाकी आपके स्पॉन्सर्ड है. इट्स अ ट्रैप, to be honest, Exactly. because then once you end up there, you end up in a trap that you don't know how to even, secure the fee and from where to get it. Because of course हम स्कॉलरशिप इसीलिए हंट करते हैं कि हमारे कोई बाप दादे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं है. तो हम सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर उसी के अंदर जो है हमारे जो मीन्स या इनकम है वो बड़ा लिमिटेड होता है. तो इसलिए आप इस तरह के ट्रैप्स में ना पड़ें. और उसके बाद फिर आप फिर प्रायोरिटाइज करें यूके वगैरह की जो स्कॉलरशिप, जैसे शिवनिंग है वहाँ पे, रोड्स है, इस तरह के स्कॉलरशिप्स. फिर आप अगर यूरोप आते हो तो कोशिश करें कि यूरोप के अंदर, इवन जर्मनी के अंदर, सारी यूनिवर्सिटीज फ्री है, सारी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, लेकिन बीच में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है. जिस तरह मैंने एक दफ़ा अप्लाई किया था कुल में, उन्होंने मुझे कहा था कि आप सिर्फ 2000 वो दे दें, यूरोज दे दें सेमेस्टर वाइज. अब 2000 यूरो लगता बहुत छोटा रकम है, लेकिन अगर आप उसको कमाने पे आ जाते हैं तो इट कंज्यूम्स एवरीथिंग, योर टाइम, योर ना आप 3 में रहते हैं ना 13 में, ना आप प्रॉपरली पढ़ाई कर सकते हैं, ना आप इनकम. मेरे गालिबन स्वीडन में भी इसी तरह होगा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज होंगे और फीस. आप, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस. और स्वीडन में मेरे ख्याल से अभी चेंज है, क्योंकि मुझे खुद ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी चेंज है. पहले तो फ्री फ्री होता था, अभी फ्री नहीं है. अभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको पे करना होता है. तो अभी मतलब स्वीडन, अगर आप सिर्फ अपने पैसों पे आ रहे हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि एक तो लैंग्वेज का इशू है, ऑल दो ये डुअल लैंग्वेज है, लेकिन जॉब्स में
और जॉब्स में आपको स्वीडिश आनी चाहिए, तो फिर उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एज अ इस बस बाहर आने के चक्करों में और आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से, उस लिहाज से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ज़्यादा बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड के, जिधर आप फिर जो है ना कोई आपको चांसेस, मेरे ख्याल से अगर आप, डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच क्या है, आपको अगर स्कॉलरशिप, क्योंकि हमारे लिए तो ये होता है कि स्कॉलरशिप एक तरह से स्केप भी होता है और एक तरह से कैरियर भी होता है, कि आप उससे निकलें, फिर आप अपनी रेजिडेंसी भी परस्यू करें, आप फर्दर स्टडीज़ को भी परस्यू करें, और एक तरह से फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा स्टेबल कर देता है वो। तो जिस तरह आपने कहा ना कि हम कोई ऐसे बैकग्राउंड से तो आते नहीं है कि जिधर आपके पेरेंट्स जो है ना आपको हर सेमेस्टर की फ़ी दे सकें। लेट्स से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, तो आपको पर सेमेस्टर $20,000 देना पड़ता है। तो आप $80,000 हम कहाँ से नहीं दे सकते हैं। जितने भी आप वेल ऑफ फैमिली से हैं, बड़ी मुश्किल होगा आपके लिए $80,000 देना, फिर उसके बाद फिर से आपने इमिग्रेशन वाले प्रोसेस से गुजरना है। तो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स का जो एक इशू है ना, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपको वापस पाकिस्तान जाना होता है, 2 साल मिनिमम स्पेंड करने होते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें, कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेट्स से एक एचएससी का कोई स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने वापस आना है, तो ऐसे कि जो बाउंड वाले स्कॉलरशिप्स होते हैं ना, वो आप पहले से आपको सोचना चाहिए। सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में या फिर जल्दबाजी में आप ले लो स्कॉलरशिप और फिर बाद में पछताओ, तो मेरे ख्याल से वो भी अप्रोच गलत है। एक ऑप्शन अभी आजकल ऑस्ट्रेलिया में उनका है कि ग्रेजुएट पे अप्लाई करते हैं ये वॉशिंगटन अकॉर्ड से, जो जिनकी डिग्रीज एफिलिएटेड हैं, तो यूटी लाहौर उसमें था। तो काफ़ी लड़कों को मैं जानता हूँ जो 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, आपने एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है और आप जा सकते हो। तो वो भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे खुद उसका इतना नहीं पता, लेकिन आप गूगल करें, उसमें मेरे ख्याल से है कोई इस तरह का ऑप्शन है। ठीक है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीस की जो बात की, अब फ्री से हरगिज ये मुराद नहीं, एक बिल्कुल फ्री है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में हम सेमेस्टर वाइज जो है 350 यूरो सेमेस्टर वाइज देते हैं। वो उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, एक स्टेट के पूरे अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है, आपको सब्सिडाइज फूड उसमें आ जाता है, फिर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं, इस तरह की चीज़ें फ्री से हर किसी, मतलब नहीं बिल्कुल फ्री है, आपको इनरोलमेंट वगैरह की फीस देने पड़े। तो ऑथेंटिक पोर्टल्स मेरे ख्याल से मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तारिक भी शेयर करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ना आपको कुछ ऐसे वेबसाइट मिलते हैं जो सेंट्रलाइज रखते हैं सारे स्कॉलरशिप के इंफॉर्मेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो मैं ऑलरेडी 4 ऐसे वेबसाइट में शेयर कर चुका हूँ। तो तारिक अगर आप भी, ठीक है, गेस यू आर म्यूट। हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई मसला नहीं, मैं शेयर करूंगा। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स वाला तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्कूल्स गेट एक होता था, मेरे पहले उसको फॉलो करता था, उस पर काफ़ी स्कॉलरशिप्स आते थे, अभी मुझे नहीं पता वो अवेलेबल है कि नहीं। स्कूल्स गेट के नाम से होता था, उस पर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स वो शेयर करते थे। बाकी अमूमन ऐसे ही होता है कि आप जिस तरह इन टच लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको काफ़ी स्कॉलरशिप्स के वैसे ही पता चलता है, लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं शेयर कर लेते हैं। तो एचईसी स्कॉलरशिप्स का ये कि वो तो आपको खुद इन पाकिस्तान में ही उनके वेबसाइट्स पे देखना पड़ेगा कि कब कब वो अवेलेबल होते हैं। तो वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है, अगर 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 आपने अवेल करना है। आजकल चाइना का बड़ा ट्रेंड है, तो चाइना इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि कभी कभार आप अनलकी होते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते नहीं है, तो फिर उस हालत में आप अपने साल ज़ाया करने के बजाय अगर मास्टर्स चाइना से करो और फिर पीएचडी के लिए किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, तो वो भी ऑप्शन बहुत बहुत अच्छा है। और जर्मन लैंग्वेज इज इट कंपल्सरी बेक्स, आप पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से जर्मनी में अगर जर्मन लैंग्वेज आपको आता हो तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं, आप इजीली जॉब वगैरह भी अगर आप करना चाहें इजीली कर सकते हैं। लेकिन विद स्कॉलरशिप नहीं, बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको डिस्करेज करते हैं कि आप पढ़ाई के साथ जॉब करें। लैंग्वेज ओवरऑल, अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, आप डीआरडी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें और इंग्लिश प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करें, वो सारा कुछ ऑनलाइन है और एक बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है उनका। तो वहाँ पे जाए आप, इंग्लिश प्रोग्राम में आपको कंपलसरी नहीं है। और अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट में, म्यूनिक में, बर्लिन में, या डॉर्टमुंड में, या हैम्बर्ग में, तो बड़े शहरों में ये कि आपको इंग्लिश जो है लोग ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन छोटे सिटीज़ में मुश्किल हो जाता है, अगर आप लोगों के साथ इंग्लिश में बात करते हैं तो वो बुरा भी मनाते हैं कि आपको जो है 2-3 साल हो गए हैं जर्मनी में और आपको अभी तक लैंग्वेज नहीं आती, या जितना भी टाइम हुआ है आपको। तो थोड़ा सा ये उस लिहाज से जर्मन रेसिस्ट भी हैं कि उनके साथ उनकी अपने ज़बान में नहीं बात करो तो वो इतना अच्छी तरीके से आपको नहीं ट्रीट करेंगे।
तो इसलिए ज़रूरी है, वरना एकेडमिक्स के अंदर अगर आपका इंग्लिश प्रोग्राम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जर्मन आता हो। एंड हाउ इज़ इट इन स्वीडन, तारिक? स्वीडन में भी एग्जैक्टली इसी तरह, जिस तरह आपने बोला ना कि थोड़ा आपको अगर इंडस्ट्री में जाना है तो वहाँ पे आपको स्वीडिश एक तरह से प्लस होता है, अगर आपके पास है। काफ़ी जगहों पर रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एकेडेमिया अमूमन मेरे ख्याल से काफ़ी कंट्रीज़ में यही ट्रेंड है कि एकेडेमिया काफ़ी इस मामले में इंक्लूसिव है अदर लैंग्वेजेस को। तो वो आप इंग्लिश आपको एज लॉन्ग आती है तो आप सरवाइव कर सकते हो। बट इट्स ऑलवेज अ प्लस कि अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है। मुझे ऑफ कोर्स स्वीडिश नहीं आती, लेकिन क्योंकि आप एकेडेमिया में होते हो तो एक नुकसान ये भी होता है कि सारे बहुत सारे इंटरनेशनल होते हैं, तो आपको फिर कभी वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपका उस तरह प्रैक्टिस भी नहीं होता सीखने में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट एक्सेप्टेंस रेट। मैं इसको, मुझे खैर कोई मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मैं अपने दो एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि कुछ कंट्रीज में जो है काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह डीआरडी का हमारा फाइनल एक ओरिएंटेशन होता है जिसमें पूरे जर्मनी से जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो उसमें मुझे पता चला कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं डीआरडी पे। उसकी वजह ये है कि उनका एचईसी के साथ भी एक कॉपरेशन है, और वो प्राइवेटली भी उनका वो है, वो स्टूडेंट्स लेते हैं। तो मेरे ख्याल से एक मैंने वो देखा। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो जीवीसी के लोग हैं यूरोप में। तो उसमें हर आए दिन जो है एक नया बंदा ऐड होता है, और वो जब इंट्रोड्यूस अपने आप को कर रहे होते हैं, वो मैसेडोनिया में पढ़ रहे होते हैं। तो मैसेडोनिया में पता नहीं कौन सा ऐसा वो है, लेकिन वो बहुत सारे लोग खुश इसलिए नहीं है कि क्योंकि उनको होता है कि हम वेस्टर्न यूरोप जाएं। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ये भी पूछ रहे होते हैं कि हम जर्मनी कैसे आए हैं, या हम फ्रांस कैसे आए हैं, हम फलाने कंट्री कैसे आए। तो मेरे ख्याल से उस आप मैसेडोनिया में देखें, मैसेडोनिया ऑल दो एक वेस्टर्न यूरोप की निस्बत एक पासमानदा इलाका है। पासमानदा पाकिस्तान से बेहतर होगा आई एम श्योर, लेकिन ऑल ओवरऑल जो है वो जो ईस्टर्न यूरोप थोड़ा सा एजुकेशन वाइज इतना अच्छा नहीं। इसी तरह टर्की भी में भी जाते हैं लोग, साइप्रस भी जाते हैं। तो ठीक है, उनकी भी एजुकेशन अच्छी, लेकिन कोशिश करें कि आप, जिस तरह मैंने पहले कहा था, कि प्रायोरिटाइज करें। अगर यूके यूरोप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में नहीं होता, फिर आप देखें वेस्टर्न यूरोप में, फ्रांस में देखें, जर्मनी में देखें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखें, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें। फिर जैसे तारिक ने कहा कि चाइना भी आप जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तारिक, इफ यू वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। हाँ, जिस तरह आपने बोला आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। आई एग्री कि आपको देखना चाहिए कि आपका क्या प्रायोरिटी क्या है। तो स्कॉलरशिप्स ऑफ कोर्स, जितने अच्छे स्कॉलरशिप से आप जाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन फिर ये कि आप, एक चीज़ ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपने सेटल होना है तो फिर आप उसकी इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ भी चेक करो कि कौन से कंट्री में ज़्यादा इजी है। तो उसको, वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट। अगर कोई दूर बंदा है उससे पूछ लो कि क्या सिस्टम है। अगर कनाडा ऑस्ट्रेलिया में अमूमन लोग इसलिए ज़्यादा जाते हैं कि एक तो लैंग्वेज वाला इशू नहीं होता, और दूसरा ये कि आप इमिग्रेशन भी वहाँ पे पहले काफ़ी ईजी थी, अब दिन ब दिन हर जगह मुश्किल ही हो रही है। तो हमें भी नहीं पता कि हमारे बाय द एंड ऑफ आवर डिग्री क्या होगा, पॉलिसी क्या होगी, रूल्स क्या होंगे। तो पहले ऑस्ट्रेलिया, इधर स्वीडन में बहुत अच्छा था कि आपको 4 साल बाद पीआर मिल जाती थी। अभी आजकल रूल्स चेंज हैं, आपको यू नीड टू हैव अ जॉब एटलीस्ट आई थिंक 13 मंथ के कोई कॉन्ट्रैक्ट है और कोई मिनिमम उन्होंने अमाउंट रखा हुआ है। तो वो चेंज होता रहता है। तो आई थिंक उसको भी देखना चाहिए कि आपका मतलब वो उस तरह से आपके क्या चांसेस हैं। क्योंकि एक तो ये कि मास्टर स्कॉलरशिप्स आपको मिलता है तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर आपको दौरान मास्टर स्कॉलरशिप्स आप फिर पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए थोड़ा हंट कर सकते हो, और ऑलरेडी आपने एक स्कॉलरशिप लिया होता है तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्ट्रांग हो गया होता है। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। बट इट्स ऑलवेज गुड टू अप्लाई फॉर द गुड वंस। फिर एक्सेप्टेंस का ऑफ कोर्स, अगर एक्सेप्टेंस रेट पाकिस्तान से हाई भी है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि एप्लीकेशन रेट भी हाई होगी। तो फिर यू हैव टू थिंक दैट द कंपटीशन भी उसी तरह फिर काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हर चीज मतलब उसको स्टेटिस्टिकली देखने का कोई फायदा नहीं है। आप उन चीज़ों पे ना जाएं कहाँ से एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। आप अप्लाई करें हर जगह। आपके पास एप्लीकेशंस अगर रेडी हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे हैं और आपके पास आइल्स है, तो फिर आपको क्या मसला है। आपने तो अप्लाई करना है ना। वो आप एक्सेप्ट होता है रिजेक्ट होता है वो तो बात की बात है। या फिर ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट कहाँ से है वो आई थिंक वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप
आप रेडी हो और आप अप्लाई करें, बस उसके बाद आप होप करें कि आपको मिल जाए, नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है तारिक, थैंक यू। जस्ट एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसके साथ कि ये आपके फील्ड पे भी डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग जो है, जिस तरह आप अगर आईटी वगैरह में हो तो वेस्टर्न यूरोप और स्कैंडिनेविया में आपको बड़े इजीली जॉब मिलेगा, क्योंकि इनको आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी टेक्निकल जॉब में हॉस्पिटल वगैरह में हो तो ये अंडर स्टाफ्ड है यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह, तो इस तरह की जॉब में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा पोस्ट वर्क जो एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी पोस्ट स्टडीज एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह यूके के अंदर एक पॉलिसी है उनका कि आपको, आप जैसे जॉब सिक्योर करते हैं वो आपको 2 साल की पोस्ट वर्क वीज़ा, उन्होंने ये ब्रेग्जिट के बाद इंट्रोड्यूस किया था, तो वो इस तरह के भी वो ऑप्शंस है। बाकी जहाँ तक आपका लास्ट वो है कि masterportal.com, नेवर हेard ऑफ दिस तारिक, हैव यू हेard ऑफ मास्टर? और सेम। अच्छा, तारिक ने ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स का जो पाकिस्तान में जो वेबसाइट है उसका लिंक शेयर किया है चैट में, आप सेव करें इस तरह के लिंक्स। और एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Welcome those of you who just recently joined. I mean, free to turn on your camera and just be part of the conversation. Anyone? Any other question? I guess हमने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया Q&A में? We have answered almost all of them. Yeah? Yeah, it seems so. तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर किसी को जो है पर्सनली फिर रीच आउट करना है तारिक को, तारिक विल बी अवेलेबल। आई मेक श्योर दैट ही इज इन आवर ग्रुप, और यू कैन then reach him out. So Tariq, thank you very much. I mean, you put a lot of effort in, doing these slides and everything. और फिर आपने बहुत जो है इन डेप्थ हर तरफ से जो है कोशिश की कि क्वेश्चंस को एड्रेस करें, और लोगों के जो बिल्कुल बेसिक कंसर्न्स होते हैं वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किया। और मेरे शॉर्ट नोटिस पे जो है आप तशरीफ लाएं, और इंशाल्लाह बल्कि आप आ जाएं सर, आप को वेलकम करना चाहेंगे जर्मनी या स्विट्जरलैंड में। थैंक तो यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बाकी होपफुली इस कम टाइम में कुछ ना कुछ किसी के लिए कोई फ़ायदा हुआ होगा। बाकी हेल्प के लिहाज से कि हम अवेलेबल हैं, बात प्रॉमिस तो नहीं करते कि आपको, क्योंकि एक तो हमारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट, कुछ लोग तो कॉल करते हैं डायरेक्ट, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले कॉल डायरेक्ट उठाएंगे, तो जब बिजी होते हैं तो हम रिप्लाई नहीं करते ऑफ कोर्स, बाद में आपको रिप्लाई करेंगे। और कोई भी हेल्प चाहिए हो, अपने पर्सनल स्टेटमेंट भेजना हो, वी माइट नॉट बी द राइट पर्सन, बट आप हमें सेंड करें, हम आगे किसी के साथ शेयर करेंगे। और इस तरह से क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं है, तो हम वी आर ऑलवेज देयर, रेडी टू हेल्प। थैंक यू। एक और चीज़ मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि मे बी फॉर योर गुड, कि यहाँ पे एक इश्यू ये है कि हमें कैलेंडर के साथ चलना पड़ता है। हर चीज़, हमारे अपॉइंटमेंट पहले से मेंशन्ड होते हैं, बुक्ड होते हैं थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ। तो अगर हम इमीडिएटली किसी को रीच आउट या रिस्पॉन्ड ना कर पाए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप डिसहर्ट होना या कुछ। तो हर बंदे का यहाँ पे, ये हम तो एक आउटसाइड चीज़ कर रहे हैं, अपने काम से बाहर हम एक चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें हर्ट नहीं होना। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास टाइम होगा हम उसमें एड्रेस करेंगे। एग्जैक्टली, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर अगर इन केस सर जल्दी रिप्लाई ना किया, कोई अगर एक एक मीडियम पे रिप्लाई नहीं किया तो दूसरे पे मैसेज कर दो, इन केस अगर कहीं मिस हुआ है। अमूमन बंदा व्हाट्सएप यूज करता है, लेकिन कभी कभार ये ग्रुप्स में ये नुकसान होता है कि आप, बाकी कुछ लोगों को मैं लिस्ट में जो बंदे हैं, मैं शायद एक अजमत को तो मैं जानता हूँ, कज़न है मेरा, तो अजमत, बाकी किसी को शायद कुछ कुछ को शायद मिला हूँ मैं, लेकिन आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप विलिंग हैं, आई एम हैप्पी कि आप लोग अभी से सोच रहे हैं। तो आप लोगों का अभी क्या कुछ बैचलर्स में होंगे, कुछ मास्टर्स में होंगे, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई थिंक। So, thank you so much, Tariq. Thank you so much for coming, and थैंक यू सो hope मच। that we will see each other again. And इंशाल्लाह। everyone for joining in. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Bye.